बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पे लोग अपनी राय दही करेंगे। जहां पे लोग इस हवाले से एक्साइटेड भी हैं, वहां पे बहुत से लोगों को इन खदशात का भी सामना है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होंगे। ख़ासकर पाकिस्तान की एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हवाले से बहुत से मसाइल का सामना है। वो उन मसाइल की रिड्रेसल के लिए बहुत से मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डिफरेंट प्रोविंसेस में इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी फ़ैसले इन कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से जारी हों, वो पाकिस्तान में तरक्की को लेकर आएँ, अच्छी ख़बर को लेकर आएँ और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो जाए। एक अच्छी ख़बर मेरे पास भी है। मैं पाकिस्तान में इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान पर गहरी नज़र रखे हुए हूँ। मेरे पास कुछ पाकिस्तान स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो से अदाद-ओ-शुमार हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से। वो अदाद-ओ-शुमार मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर हम देखेंगे कि उससे एक कैसी तस्वीर उमड़ के आती है। क्या वो एक तस्वीर हौसला अफ़ज़ा तस्वीर है या कोई उससे कोई एक मुख्तलिफ़ किस्म का पहलू निकल रहा है। मैं जल्दी से आपके सामने उसको रखता हूँ। ये स्टैट्स आर these stats are actually related to export and import pertaining to past 6 months. अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू से के लास्ट मंथ दिसंबर में हमारी जो इंपोर्ट है that has actually been increased by 22% if you see here, and the imports in the month of December are decreased by 12%. So usually we see such spikes, which happens randomly, um, which must be ignored and should not be shared. But there is another factor which actually made me to share this information with you. The pattern of increasement and decreasement is not spanned on 1 month only. It is actually based on 6 months. If you see the second column, if I am able to show you the second column, if you see here, starting from July to December, Alhamdulillah, our exports are increased by 5% and import are decreased by 16%. So if you see, the current deficit between import and export stays between 11 billion to 12 billion. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना कि जब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल बैलेंस हो जाएगा तो दैट मीन्स वी हैव अटेन्ड स्टेबिलिटी और फिर हमें लोगों के सामने कशकोल फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हमारा जो ट्रेडिशनली हमारा डेफिसिट हमेशा से बहुत ज़्यादा रहा है, जो कि अब गुज़िश्ता 6 माह से स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस डेफिसिट को हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कैपिटल working in overseas, they are sending remittance in Pakistan, so this helps us to cover the deficit, and then still to cover the remaining deficit हमको कशकोल उठाना पड़ता है, लोगों से उधार मांगना पड़ता है। तो अल्लाह मियाँ ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला if we are able to balance this deficit, so that means we have attained stability. तो इस स्टेबिलिटी के लिए हमें कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत है। और कॉन्टीन्यूटी से पहले एक फैक्टर हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया कि व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपेंड इन दिस कंट्री, कि ये 6 माह में हमारी ये पैटर्न मेरे सामने देखने को नज़र आया। तो आई एक्सटेंडेड माई रिसर्च, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में 2023 जून में SIFC के नाम से एक फ़ोरम तश्कील दिया गया, जिसका मकसद एक वन विंडो ऑपरेशन प्रोवाइड करना था टू फैसिलिटेट लोकल बिजनेसेस इन पाकिस्तान एंड expanding the foreign direct investment in Pakistan, and not only that, expanding your export portfolio. So presently, if we see, primarily we have uh, maybe 2 to 3 fields where we are actually exporting our products. One is textile, and another is some IT services, and maybe a few products from agriculture sector. We need to expand on that. We need to work on it. We need to expand manufacturing industry. We must be able to
export things from manufacturing industry. And on top of it, we have uh, population, 60% of the population is a young population in Pakistan. We have to channelize that population, तो उनको हमने वो skill देनी है, so they should be able to become a great asset for Pakistan, not only in Pakistan, and even when they go overseas, so they bring you know प्रॉस्पेरिटी कैपिटल एंड एवरीथिंग इन पाकिस्तान. सो इसको इसको मद्देनज़र रखते हुए SFIC की तश्कील की गई जिसमें बहुत सी पॉलिसीज़ को जॉट डाउन किया गया. और जैसे मैंने आपसे बताया, वन विंडो ऑपरेशन जो फाइलिंग सिस्टम है, डिले सिस्टम है, उसको रिमूव किया गया. फिर कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जा सकता है. एक हमारा IMF के साथ मुआहदा था, वो लिंगर ऑन था फॉर पास्ट 1 ईयर, वो हमारा हुआ. फिर उसके अलावा फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गो कि वी आर प्रेजेंटली हैविंग अ ग्रेट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ security, but still we are managing things and we are able to send back illegal immigrants, those who are illegal and living in Pakistan. So we are able to send them. So these are some of the factors which are, I think, uh, uh, helping to achieve these statistics. So we need to have to maintain the continuity. पॉलिसीज़ SIFC बन गया, पॉलिसीज़ तश्कील दे दी गई, और फिर नई गवर्नमेंट बन गई, निगरान हुकूमत बन गई. और निगरान हुकूमत में we may have some concerns in terms of their constitutional legitimacy, but I won't step into that. हमारे जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, इजाज़ गौहर साहब, apparently is seeing from these statistics, I must appreciate him. I think he is doing a good job. तो हमें continuity की ज़रूरत है. 6 महीने से या जब से वो आए हैं, आई गेस अगस्त अक्टूबर से वो आए हैं, तो things looks to be promising. So for continuity purpose, so we're gonna have election. So अब जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, हमने राय दही करनी है. मैं तो शायद राय दही ना कर पाऊँ सिंस आई एम लिविंग अब्रॉड. सो अल्लाह मियाँ ने अगर मौका दिया तो डेफिनेटली पाकिस्तान में जाके अपना वोट कास्ट करूँगा, या दैट्स अ साइड थिंग. बट आप जो खासकर पाकिस्तान में हैं, तो आपने तो वोट कास्ट करना है. तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप अपनी राय दही अर्क रेजी से करनी है. आपने ओपिनियन आपने फॉर्म करना है बेस्ड ऑन collecting information, performing analysis, doing assessment, and then give your opinion. Then select any person you find suitable for the prosperity of Pakistan. गुजारिश ये है कि आपने किसी फेस को देख कर वोट नहीं करना है, किसी इमोशनलिज्म की बेस पे नहीं करना है. इन्फॉर्म्ड डिसीजन, परफॉर्मेंस, स्टैटिस्टिक्स की बेस पे करना है. बिकॉज इट्स अबाउट the future of Pakistan. It's about your future. It's about your next generation future and generations after. And it's about people living in Pakistan under the poverty line, and which is we are seeing the poverty is increasing in Pakistan day by day. Inshallah Ta'ala, we have to overcome this, or that can only be achieved through your votes. So vote out करें बेस्ट बंदे को. एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि SFIC में जो बनी थी, जाते जाते क्विकली, उसमें मिलिट्री का भी रोल है, सिविल का भी रोल है. आई डू अंडरस्टैंड, वी हैव कंसर्न, वी आर अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेटिक पीपल, we want our country to be governed democratically 100%. But given the situation, there are things, from the economy perspective that needs to be managed. People are struggling to manage their bread and butter. So let's fix that, and inshallah ta'ala, rest assured, inshallah ta'ala, we all will struggle together. We do understand this is probably beyond the mandate of military, working in different sectors. So inshallah ta'ala, and they also have realization about that, I hope so, having a
in good faith. अल्लाह करे they must have a realization. तो अल्लाह करे जब हमारी economy stable हो, they would go back, we would insist them, we will struggle, and इंशाल्लाह ताला वो भी achieve करेंगे. तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो. मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मैंने जो अभी काविश आपके सामने रखी, आई फाउंड सम इंफॉर्मेशन, आई शेयर विद यू with an expectation, it might help you to make an informed decision before you go to the polling station on 8th February. Inshallah ta'ala ये सिलसिला जारी रहेगा. The information that I achieved from the different fields, I will continue to share my assessment with you. It's not one thing again. One more thing is finally I want to share with you. I am just sharing my assessment. I am not saying my assessment is 100% right and perfect. I have presented you some facts, and you also work on it. You also collect some facts and do your analysis, do your assessment. If you find my assessment um, clumsy, or you find some biasedness elements, so maybe uh, you can ignore that, or some of you would find my assessment 100%, I hope so. So do your analysis and give vote based on assessment. Allah Hafiz. Thank you very much.